Good morning, students. Today I'm going to explain you exercise 8.2 of unit measurement. So first question is convert the following into centimeters. As you already know, the standard unit to measure length is meters and centimeters. Standard unit means which is used all over the world. स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो सब जगह एक जैसा यूनिट हो. तो सब जगह लेंथ को किससे मेजर किया जाता है? मीटर एंड सेंटीमीटर. मीटर इज यूज्ड टू मेजर लॉन्ग लेंथ. ज्यादा लंबी चीजों को मेजर करने के लिए हम मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं. सो इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू कन्वर्ट into centimeters. So first question A part is 2 meter. You have to convert 2 meter into centimeter. तो मैंने पहले ही बताया मीटर इज अ बिगर यूनिट एंड सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट. तो अब हम मीटर को बड़े यूनिट को हमें छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है. इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर. So to convert meters into centimeter, you will multiply 2 by 100. To convert meter into centimeter, you will multiply 2 by 100 because in 1 meter there are 100 centimeter. These 3 dots in the form of triangle means therefore means इसलिए. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसलिए अगर हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 200 सेंटीमीटर. सो टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ क्वेश्चन 2 बी पार्ट 16 मीटर. Again, you know कि 1 meter, in 1 meter there are 100 centimeter. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है. Therefore, 3 dots. Therefore, to convert 16 meter into centimeter, what you will do? You will multiply 16 by 100. So answer will be 1600. When you multiply any number by 100, so what you will do? You will write the number and you will add these 2 zeros along with it. So it will become 1600. C part is, now here both the units are given to you, meter also and centimeter also. तो इसमें इस नंबर में मीटर भी है सेंटीमीटर भी है बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स. सो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर. ऑलरेडी यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो टू कन्वर्ट 8 मीटर इनटू सेंटीमीटर यू विल मल्टीप्लाई 8 बाय 100. But this is already in centimeter. 5 is already in centimeter. So no need to convert it in centimeter. 8 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे बट यहाँ पर ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है इसलिए 5 को चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो यू विल एड दिस 5. Therefore 8 multiply by 100. So to convert 8 into meter, what we will do? We will multiply 8 by 100 plus 5. 8 multiplied by 100 is equal to 800 centimeter plus 5 centimeter. So 800 plus 5 is equal to 805 centimeter. Now next part is 3 meter and 25 centimeter. Again you will convert only meter into centimeter. So 1 meter is equal to
100 centimeter. So to convert 3 meter into centimeter, you will multiply 3 by 100. You will multiply 3 by 100, and this 25 is already in centimeter. So no need to change 25. So 3 multiply by 100 plus 25 जो सेंटीमीटर है उसको आप ऐड कर दोगे. So 3 multiply by 100 is equal to 300 plus 25 is equal to 325 centimeter. I hope it's clear how to convert meter into centimeter. Thank you. Now, in question number 2, you have to convert the following into meters and centimeters. Now, in this question, the number is given in centimeter and you have to convert it into meters. यहाँ पे number centimeters में दिया गया है और आपको meters में convert करना है. So, you have to keep one thing in mind, like this is meter. Meter is a bigger unit. So to convert bigger unit into smaller unit, yani centimeter. Meter is a bigger unit and centimeter is a smaller unit. So to convert bigger unit into smaller unit, you have to multiply. But to convert smaller unit centimeter into meter, that is bigger unit, what you have to do? You have to divide it by 100. So in first question it is written 200 centimeter. So you have to convert 200 centimeter into meter and centimeter. So as you already know कि 100 centimeter is equal to 1 meter. So to convert smaller unit to bigger unit, छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए you have to divide by 100. So 200 you will divide by 100. This is a symbol of division. Straight line and 2 dots, 1 dot up and 1 dot down. This is a symbol of division. So first you will write 200 on the top and 100 below 200. So when you have to divide any number by 100, जब भी आपको कभी किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना होता है तो आप क्या करोगे? 100 में how many zeros are there? 2 zeros are there. 100 में how many zeros are there? 2 zeros are there. So you will start counting from back side. आप पीछे से काउंट करोगे और 2 digits के बाद वहां पर डॉट डाल दोगे. नाउ 1 2, ये 2 सेकेंड 0 के बाद यहाँ पर डॉट आएगा तो हमने यहाँ पे 1 2 के बाद डॉट डाल दिया. सो बिफोर डॉट, डॉट से पहले वाला यूनिट होता है मीटर और डॉट के बाद वाला सेंटीमीटर. डॉट से पहले मीटर और डॉट के बाद सेंटीमीटर. सो देर इज 0 0 here. So 0 doesn't have any value. So 200 centimeter is equal to 2 meter. Now B part, you have to convert 756 centimeter into meter. Again 100 centimeter is equal to 1 meter. Therefore what you have to do, क्योंकि छोटे यूनिट को मीटर में कन्वर्ट करना है, so you will divide 756 by 100. So 76 it will come on the top and 100 will come below. So we will count from back side. How many zeros are there? 2. So 1 2. तो पॉइंट विल कम बिफोर 5. 5 से पहले डॉट आ जाएगा. सो बिफोर डॉट, डॉट से पहले इट इज मीटर. सो यू विल राइट हियर 7 मीटर एंड आफ्टर डॉट इट इज सेंटीमीटर. सो इट इज 56 सेंटीमीटर. सो 756 centimeter is equal to 7 meter 56 centimeter. Now C part is 1105 centimeter. Again 100 centimeter is equal to 1 meter. So to convert 1105 centimeter into meter, you have to divide it by 100. So on the top you will write 1105 and below you will write 100. In 100 how many zeros are there? 2. So you will start counting from back side. After 2 you will put the dot. 1 2. The dot will come between 1 and 0.
So before dot it is meter and after dot it is centimeter. So it is 11 meter and 05 centimeter. And what's your homework? Maths homework is do part A to F of question number 1 and 2 in your fair notebooks. I hope this topic is clear to you, my dear students. Thank you.